हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमल लूथरा एंड वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। आज है हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर निखिल मित्तल, जो कि अब एक सेबी ग्रेड के ऑफिसर है। निखिल वाज वर्किंग विद एन एमएनसी। बहुत ज़्यादा उनको मतलब काम करना पड़ता था। अभी मेरे को पता चला कि ही वाज वर्किंग फॉर लाइक 12 to 13 आवर्स अ डे, और उसके बाद भी उन्होंने मैनेज किया इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। निखिल का ये सेकेंड अटेम्प्ट है, और इस बार इनका स्पेशल फोकस था न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। जो कह रहे हैं कि भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे, तभी मेरा एग्जाम इस बार क्लियर हो पाया। वही उनका जो शॉर्टकमिंग था पिछली बार का, उन्होंने उसको ठीक किया इस बार। सो निखिल, ओवर टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना थैंक चाहता यू। हूँ। निखिल से जब मैंने एक बार कनेक्ट किया था, तो इंटरव्यू से पहले बहुत ज्यादा स्केर्ड थे कि इंटरव्यू में क्या करना है जाके, मतलब कैसे बैठूं मैं। तो वो वाला कॉल आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट था निखिल के लिए और मेरे लिए। तो उस कॉल के बाद निखिल की नर्व्स बहुत काम हुई थी, और उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू में परफॉर्म भी किया। फिर अगेन निखिल का Right. मेरे को कॉल आया बाद में कि सर, अभी मैं तो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मेरा, मतलब मेरे को इंटरव्यू के बाद जॉब नहीं मिला। तो इसका जो रैंक था वो 29 था। 28 वाले को ऑफर लेटर आ गया था, 29 को नहीं आया था। तो मैंने निखिल को ये एश्योरेंस दी कि 2-3 दिन वेट करने का, 2-3 हफ्ते वेट करने का, यू विल गेट द कॉन्फर्मेशन। क्योंकि मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे थे इस ऑर्गेनाइजेशन को, उनके कुछ और प्लान थे। तो मैंने बोला निखिल वेट करो, आपको मतलब सेबी से ऑफर लेटर आ जाएगा। एंड अब निखिल का सारा मेडिकल वगैरह सब हो गया है, और वो सून सेबी को ज्वाइन करेंगे। सो ओवर टू यू निखिल, अपनी जर्नी को शेयर करो, सारे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करो कि वो कैसे आगे जाके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। Thank you, sir. Thank you so much for that wonderful introduction. Hello. I mean, hello, all the students, all the aspirants who are watching this. Uh, uh, SEBI. अगर आप, if you're an aspirant of SEBI, you already know कि how important and how critical this exam is. This position is. ये organization क्या है? You must be knowing about that. And this exam, if I have to straight away jump into it कि ये exam क्या आपसे demand रखता है, क्या demand करता है, so just know that this exam and this organization would test you on all the fronts. जो इस एग्जाम का करिकुलम है, and this the phases, the both the phases, phase 1 and phase 2, they test you on the basis of what your, not just what your knowledge is, but what your temperament is towards the exam, towards what your approach is. Because they don't want to just know your knowledge, they also want to see how you tackle or how you approach an exam when it's little more difficult. And that is how this year's exam also was. Because आपने सही आंसर्स तो आपको मत पता होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि आप उन क्वेश्चंस को देख भी नहीं पाते जो जो आपको आ रहे होते हैं, बिकॉज यू आर स्टक ऑन सम बेसिक क्वेश्चंस. एंड दैट्स व्हाई उस तरीके का अप्रोच आपको रखना है कि आपको बेसिक्स भी समझने हैं और आपको एडवांस नॉलेज भी गेन करनी है, ताकि आप पूरे एग्जाम को एक बहुत अच्छे तरीके से आप दे पाए. And if I have to break down the exam, it is you are aware that it's in two halves, phase 1 and phase 2 में होता है. phase 1 के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, it's more along, it should be कि आपको पता होना चाहिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेंशन किए हुए हैं सेबी के सिलेबस में, यू शुड बी अवेयर कि उनका क्या है, मतलब उनके बारे में आपको सब सब कुछ ऑलमोस्ट पता होना चाहिए. I would recommend all the aspirants to at least read the SEBI syllabus once. This time I felt कि they were very particular about the terms that they used in the syllabus. Like finance commission एक term था syllabus में जो उन्होंने use किया हुआ था. I am taking this as an example, only one example, and उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते because we are more focused on the finance part की, या कंपनीज एक्ट में हमारा फोकस होता है, अकाउंट्स पे फोकस होता है, बट वी फॉरगेट कि उन्होंने कुछ टर्म्स ऐसे भी मेंशन किए हुए हैं जो करंट अफेयर से या जनरल लाइफ से रिलेट करते हैं. It can be budget also, it can be other things also, and they asked questions from that finance commission. तो हमें लगेगा कि अरे ये तो मेंशन ही नहीं किया था कहीं, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, फिर ये कैसे पूछ दिया, बट एक्चुअली दे आर एक्चुअली स्टिकिंग टू द सिलेबस. So I would say give a read to the syllabus once before you start your preparation. That is very, very important. And see what are the topics that they are mentioning. After that, you see
now what are the things first you are good at, and then what are the things you need to be focused about. So for phase one, because the part of reasoning, maths, English and GK, which is the paper one of phase one, there you have to secure a cutoff of, I think it's 30% for paper one and 40% for paper two, and overall it should be 50%. तो वहां पर आपको थोड़ा सा leverage है that if you are good at in any one of the sections, very good, then you can be a little more you can, in the paper one part only, I would say you can be a little more complacent. Jैसे I was good at English, so I was less worried about reasoning, which is a very tricky section. Sometimes you can attempt the question, sometimes you cannot. And maths, but these were my weaker sections, so I was more focused on English and GK, which were in my control, so that I could clear that paper one part. And for paper two, you have to be like ki bhai, you have to have a very good understanding and knowledge both of the current affairs, especially like generally when the exam happens, it is near about the budget time or the financial, the economic survey time ke aspas exam rehta hai. So generally you can expect questions from those. And also you can, and definitely you have to be very strong in concepts of accountancy, Companies Act. Matlab, you have to be thorough, क्योंकि this time I saw questions like there, I can still remember a question from cash and cash equivalent that they asked, which was not a very straightforward question. So you have to have you cannot say ki I am a chartered accountant, or I have this qualification, so I would be able to clear it because mujhe to sab aata hai. It's not that. You have to have a preparation for it. आपको करना होगा prepare. You have to go deep dive, because questions are not so straightforward anymore. They are trying to test you on all the fronts. So be very, very careful about the things that you are studying, and keep that approach that I have to be thorough. At least if I'm reading one accounting standard मैं पढ़ रहा हूँ या मैं Companies Act पढ़ रहा हूँ, I have to read it whole, because an objective question is very tricky, very, very tricky. कि वो कहीं से भी उठ के आ सकता है, पूरे AS में से या पूरे कंपनी स्टैंडर्ड में से. So it's very important, especially there are sections of management and sections of motivation, morale के जो subjects हैं, these subjects are not at least I think they are not your readily day-to-day subjects which you have studied. So you need some command over that as well. So आप उसके लिए जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हो, आप चाहे आप वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे या आप अपने नोट्स बना रहे हो, आप बुक्स रेफर कर रहे हो, सो बी एब्सोल्युटली श्योर कि व्हाट इज द सिलेबस. जब आपको सिलेबस पता होगा तब आपको कंटेंट पता होगा, कंटेंट पता होगा तो आप नोट्स उसी हिसाब से बना पाओगे. सो डोंट हैव टू मेनी सोर्सेज, आई वुड से. आई थिंक स्टिक टू वन सोर्स, which is very, very important. I mean, be as focused as you are for the exam, be as focused as in your preparation material as well. Just keep one source. If you are referring to a YouTube channel, then constantly refer to that channel so that you can get a streamlined approach of studies. So because that helps you get connected to that particular source, and then you understand how they teach, how they how they are trying to prepare you. So if you do that, that will be very, very helpful. You will feel your preparation level gets multiplied. And if you are running from source to source, you are definitely going to feel you are going to feel that okay, सब एक चैनल पे तो ऐसा बोला था, इस चैनल पे ऐसा बोल दिया, या एक सोर्स ने तो ऐसे बात करी थी, इसने ऐसे बोल दिया, अब मैं क्या करूं. And you are going to feel that. So I would say stick to one source. That is very, very important. Try to solve as many MCQs objectives as much as you can, because most of the people which are eligible for this exam, they give subjective based examinations, right? They have a subjective approach. Even if you're very good in subjective, objective requires that slightly different level of execution. उसमें थोड़ा सा minute जाना पड़ता है, because sometimes they can even ask you a section number, and which may not be as important in a subjective exam, but in objective it makes all the difference. So you have to have that approach, that minute approach. And so
these are the things that are very, very important as far as paper 1 is concerned, because paper 1 you have to see वहां पे एक minimum cutoff clear करना है, and that is you should be your focus. You don't have to focus कि मुझे 200 में से 200 नंबर लाने, because that won't I mean, if I scored 110 in paper 1 combined for both the paper 1 and paper 2, I scored 110 out of 200. And I would say कि you have to focus कि भाई मुझे clear करना है. I have to go past that 80 का score. That should be your focus. So वहां पर आपको ऐसी approach भी बना के रखनी है कि मुझे इस तरीके से इस पेपर को clear करना है. So and coming to paper 2, here is where I mean everything is different, I would say. Here, please, I would request everyone to put their focus also on the numericals part. Paper 1, generally you won't get an in phase 1 you don't get a numericals. Generally नहीं आते, maybe एक कोई आ गया तो बहुत बड़ी बात है. But paper 2 is where you get so many numericals, and it's very, very important that you execute yourself in numericals, because वहाँ पे there is very little room for doubt whether if you're getting an answer, that probably would be the right answer, and if you're not able to solve, you're not able to solve. Okay, so there is a confirmation कि मुझे option आता है या नहीं आता है. And trust me when I say this, that numericals, if you go and with the numericals practice करके आप जाओगे, it saves time. I would say it saves time more than the theoretical question. Why? Because sometimes the theoretical question is so close, the options are so close to each other, that you keep on reading the question to understand कि भाई मैं कौन सा option mark करूं. That I faced that issue in the economics section, because the options were very, very kind of, I would say, close. They were like अच्छा थोड़ा confuse करते हैं. That was the thing. So I would say that it saves time. It gives you confidence when you solve a practical question that मेरा answer आ गया, exactly match कर गया. And it also and it obviously it's a very important part of the exam. So make sure that you do the numericals. Apart from that, please make sure that at least the things that you have not studied, like in CA there's a very little room for economics. Okay, but let's say in graduation, either you may have studied it, you may have not studied it. Like I was not a student who had those in-depth knowledge of economic sections, economic part, and it was very difficult for me to prepare for economics. But I tried to use some of the things from my graduation background, but I still would say it wasn't enough. In the paper, I found it very difficult to handle economics. So economics, if you are strong in economics, good for you. But if you are not, please make sure that you study hard for economics, because questions are not going to be easy. And you have to have an in-depth knowledge. So some topics you would automatically realize are favorite topics, and important topic like national income and how to calculate all the GDP or the GNP, these topics, national income accounting, these are favorite topics, which are more often than not you will expect a question from that, both in paper 1, in phase 1 and phase 2 both. So it's very important that try to practice as much as you can for these topics, and also equally give focus to the other topics, because it's one question can make all the difference. हाँ ना, पेपर टू I would फेज say 2 के लिए तो आई डोंट थिंक कि कुछ चीज इंपॉर्टेंट है. आई थिंक तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है. अगेन न्यूमेरिकल्स everything. वाला पार्ट, हाँ न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट यू सेड इट करेक्ट कि दैट सेव्स टाइम्स अगर आपने प्रैक्टिस करा हुआ है. एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर तो ऑब्वियसली पता था आई गेस जो भी एस्पिरेंट्स है कि वही डिफरेंस होगा सिलेक्शन और नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन सेबी ऑर्गेनाइजेशन. सो अगेन निखिल, Right. आपने सब कुछ मतलब इतना ब्यूटीफुली मतलब बता दिया कि Q&A सेशन का टाइम मेरे को लगता है कि जरूरत ही नहीं है. आपने सब कुछ बता दिया कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए हर एक टॉपिक को खोल खोल के, बीट फेज 1 और फेज 2 ऑफ द एग्जामिनेशन. और कुछ आप शेयर करना चाहते हैं स्टूडेंट से? हाँ सर, मैं यही स्टूडेंट्स से शेयर करना चाहता हूँ कि फॉर दीज एग्जाम, दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स, योर प्रिपरेशन, आई मीन the thing is that there is very little room for error. That is because the cutoffs are so close. They are so close. Ek number, I would say within half marks, you either lose out or you can make it.
So that is how much. I know one aspirant who didn't get selected to SEBI और उसका difference था 0.15 marks. I mean 0.5 नहीं 0.15 marks. So वो difference है. 0.15 Yes. इतना exactly. difference है. And you can, that makes you realize that how close the competition is. So you cannot be like कि I won't do this topic, एक question attempt नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, and ये topic छोड़ देता हूँ, ये मेरे बस का नहीं है तो इसको छोड़ देता हूँ, इसका question आ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा. You cannot do that. You have to have कि मैं सब कुछ सारा syllabus cover करके जाऊं. आप टिक मार्क करके रखो कि आपने सेबी का सिलेबस जो नोट किया है उसमें आपने सब कुछ कवर कर लिया है कि नहीं कर लिया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू कैनॉट अफोर्ड टू स्किप अ क्वेश्चन. सो एंड गिव मॉक टेस्ट, गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन. आप अपनी स्पीड पे वर्क कर पाओगे उस तरीके से, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज इंग्लिश को इग्नोर मत करना. दैट इज ऑल्सो, एंड इंग्लिश को भी इग्नोर मत करना. आई वुड डेफिनेटली टेल यू, क्या पता आप बहुत यू डू एक्सेप्शनली वेल इन द फेज 2 इन द पेपर 2, बट इंग्लिश में कहीं आपने उसको इग्नोर कर दिया और वहां पे आपने थोड़ी सी कमी छोड़ दी, तो आपका क्या पता वो डिफरेंस कर जाए, बिकॉज दैट इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट थिंग. सो इफ यू आर अ लिटिल वीकर ऑन द इंग्लिश साइड, अगर नहीं भी वीक हो, इवन देन प्लीज प्रैक्टिस इंग्लिश, प्लीज प्रैक्टिस टॉपिक्स, एंड उसको लाइटली मत लेना. प्लीज एंश्योर, I would say that your keyboard is working when you are appearing for the exam. Just test the keyboard before you start writing. Before you sit on the chair, just test the keyboard once, because it's important. It's important, I would say. कि वो सब preparation भी जरूरी है. And please ignore मत करना English को. It is very important. So all in all, I would please Nikhil, complete. No. I'm just saying that this exam is, if you're appearing for it, it's you know the importance, you know the significance it has. So please give all your effort, and definitely, I mean, you will succeed. I mean, nothing can stop you. चलो, thanks Nikhil for your precious time. And again, अभी निखिल CA रमन लूथरा क्लासेस का एक मतलब हमने बना रखा है एक पर्टिकुलर थिंग कि आपको अवेलेबल रहना है हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए. अगर किसी को डाउट आएगा और मुझसे पूछेंगे कि निखिल से मेरे को बात करनी है, तो मैं नंबर दे दूंगा आपसे बात करने के लिए. ओके? Absolutely sir, absolutely, always there. I am a part of Raman Luthra classes only, I would say. मैं हूँ. Great, thanks a lot. चलो, all the best निखिल. मिलेंगे फिर कभी बाद में अगर मुंबई आना हुआ तो. ओके? Absolutely sir, absolutely. Okay, Thank you. bye. Bye.